Lok Sabha Speaker suspends 7 Congress members for the rest of the ongoing budget session, including Gaurav Gogoi, T.N. Prathapan, among others. In a statement to both houses of parliament, Union Health Minister Dr. Harshvardhan says the government is taking all necessary steps to curb the spread of coronavirus. As the number of total positive cases in India rise to 29, Prime Minister Narendra Modi is personally monitoring the preparedness, he says. Health Minister says India is in touch with Iran on possible evacuation of Indian pilgrims and students stuck there. Indian medical team arrives in Iran for screening. Latest travel advisory mandates passengers coming in from Italy and South Korea to be tested negative for the virus first. Coronavirus spread slows down in China but worsens in Italy, with death toll mounting to 107. Italy shuts all schools for the next 15 days. Switzerland confirms the first death from COVID-19. Delhi court issues fresh death warrant to Nirbhaya convicts, all 4 of them to be hanged at 5:30 a.m. on the 20th of this month. And in cricket, in Women T20 World Cup, India qualifies for the final by virtue of finishing higher on the points table as rain washes off the semi-final against England. Hosts Australia take on South Africa in the other semi-final. Hello and welcome. You're watching DD News and DD India with me, Munmun Bhattacharya. Our top story, and that is that Lok Sabha Speaker Om Birla has suspended 7 Congress MPs, including Gaurav Gogoi, T.N. Prathapan, Dean Kuriakose, Arun Nithan, Manik Tagore and Benny Behanan, as well as Gurjeet Aujla, for the rest of the budget session. So that's the news that is just come in nearly 30 minutes back, that 7 Congress MPs have been suspended for the rest of the budget session by Speaker Om Birla. We'll get our reporters on this, but in the past as well, Lok Sabha Speaker has taken such a decision to ensure that there is order in the House. And now once again, Lok Sabha Speaker cracking down on indiscipline, suspending 7 Congress MPs for unruly behavior this time around. And let's now know more from our correspondent who's joining us. Neeraj Singh is with us. Neeraj, a tough decision taken to crack down on indiscipline by the Lok Sabha Speaker by suspending these 7 Congress MPs? देखिए बिल्कुल मुनमुन, पिछले अगर हम 2-3 दिनों से देखें तो लगातार जो लोकसभा स्पीकर हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि संसद के अंदर जो आचरण है वो ठीक तरीके से होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के जो तमाम जो नेता हैं वो जिस तरह से हंगामा कर रहे थे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो टीएमसी है वो जिस तरह से बैनर लेके लगातार वेल में आ रहे थे, हंगामा जिस तरीके से हो रहा था, कई बार लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात की चेतावनी भी दी थी, उनसे प्रार्थना भी की थी, गुजारिश भी की थी कि सरकार तमाम मुद्दे हैं उन पर चर्चा करने को तैयार है। दिल्ली दंगे को लेकर जिस तरह से कांग्रेस लगातार आक्रामक रुख अपना रही है लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हालात सामान्य होने के बाद 11 तारीख को दिल्ली दंगों पर भी जो चर्चा है वो सरकार कराएगी और तमाम विपक्ष के सवालों का जवाब भी देगी। और आज भी ऐसा ही हुआ कि जब पूरे देश में कोरोना को लेकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और सरकार ने अपना जो पक्ष है वो कोरोना को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में रखा, स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया दोनों सदनों में, तो उस समय जरूर दोनों सदनों की जो कार्रवाई है वो चलती रही। लेकिन जब 11 बजे, मैं आपको एक इंसिडेंट का जिक्र करूंगा कि 11 बजे जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई थी तो गुलाम नबी आजाद ने, जो नेता विपक्ष है, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आज हम सिर्फ कोरोना पर ही चर्चा करना चाहते हैं, उसके अलावा और किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहते। तो उस समय जो सभापति हैं उन्होंने स्पष्ट किया था कि आप इस तरह से दिशा निर्देश नहीं दे सकते, ये पीठ का अधिकार है, वो किन किन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहता है। और इसके साथ ही तमाम जो दूसरे नए सदस्य हैं वो भी अपने जो इश्यूज हैं वो उठाना चाहते हैं। तो आप इस तरह से बांध नहीं सकते हो पार्लियामेंट को। और वही स्थिति लोकसभा में देखने को मिली। बार बार गुजारिश करने के बाद, बार बार प्रार्थना करने के बाद, बार बार चेतावनी देने के बाद जो कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो नहीं माने, लगातार बेल में आते रहे, नारेबाजी करते रहे, जो पेपर है वो फेंकते रहे। और यही कारण है कि एक
जो सख्त जो डिसीजन है वो लेना पड़ा, क्योंकि अगर लोकसभा अध्यक्ष इस तरह का डिसीजन नहीं लेते तो दूसरे जो सांसद हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के सांसद हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं, जो अपने इश्यूज को रखना चाहते हैं, अपनी बात को संसद के सामने रखना चाहते हैं, अपने इश्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो 3-4 दिन से किसी भी तरह की बात नहीं रख पा रहे थे। इस स्थिति में तो निश्चित तौर पर एक जो डिसीजन है वो लोकसभा अध्यक्ष को देना पड़ा और आज पूरे बजट सत्र के लिए कांग्रेस के 7 सांसदों को लोकसभा अध्यक्ष ने निलंबित कर दिया। That's right, Neeraj, if you're still with us. अगर पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपनी बात को ठीक तरीके से नहीं रखेंगे, हंगामा करते रहेंगे, संसद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो उनके साथ सख्त कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जितना अधिकार कांग्रेस के सदस्यों का है उतना ही अधिकार दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्यों का भी है। और यही कारण है कि 7 सांसद सदस्यों को आज लोकसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। Neeraj, do you think that this will act as a deterrence against such unruly behavior in future? Because we've seen these decisions being taken in the past as well. For instance, in November last year, 2 MPs were suspended by Lok Sabha Speaker, and now we are seeing that, especially in this particular session, there has been a lot of unruly behavior. So is that message going to now go down straight to all political parties and their parliamentary party leaders that the chair will not accept such unruly behavior? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से कांग्रेस के जो सदस्य हैं जिनको सस्पेंड किया गया, उस समय भी उन्होंने इसी तरह का जो आचरण है वो रखा था। लगातार नारेबाजी करते रहे, बिल में जाके पूरे सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। और यही कारण है कि अगर आप कोई एक लाइन नहीं खींचेंगे तो ये स्थिति हमेशा के लिए बरकरार रहेगी और ना तो संसद चलेगी और लाखों करोड़ों जो रुपए है, जो आम जनता का रुपया है और जो आम जनता चाहती है कि तमाम तरह के जो कानून है वो पास हो, उनकी सुविधाओं के लिए जो सांसद हैं वो तमाम तरह के कानूनों को लेकर आए। अगर वो सब नहीं आएंगे तो कह सकते हैं कि मायने नहीं रहेगा अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर संसद को बंधक बना लेती है। और मैं आपको इस बात का जिक्र करना चाहूंगा कि जैसे ही लोकसभा के 7 जो सदस्य हैं कांग्रेस के, उनको सस्पेंड किया गया बजट सत्र से, उसके बाद कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो अधीर रंजन चौधरी हैं, उन्होंने मीडिया से भी बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हम दंगे पर चर्चा कराना चाहते थे, दिल्ली के दंगों पर चर्चा कराना चाहते थे, लेकिन सरकार है वो हमारी बात नहीं सुन रही है और हमारे 7 जो सदस्य हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो तब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप लगातार हंगामा कर रहे हैं, लगातार संसद को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं और बार-बार गया है कि आप इस तरह से संसद को बंधक नहीं बना सकते। उसके बाद भी आप इस तरह की क्यों इस तरह के जो सदस्य हैं वो क्यों इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं, तो उसका वो जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो दुविधा है वो किस तरह की है, क्योंकि उन्होंने अगर हम देखें कि जब से बजट सत्र शुरू हुआ है सिर्फ एक ही मुद्दे पर रट लगाए हुए हैं कि वो दिल्ली दंगों पर चर्चा करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि वो दिल्ली दंगों पर चर्चा करा सकते हैं, लेकिन जब तक हालात सामान्य नहीं होते तब तक चर्चा कराना कोई मायने नहीं रखता है। और उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि 11 मार्च को इस दिल्ली दंगों पर चर्चा हो सकती है, सरकार तमाम सवालों के जवाब देगी, विपक्ष के जो भी सवाल। Absolutely, Neeraj. So our correspondent putting things in perspective. Neeraj, hold your thoughts. Let's get in the view of other correspondent as well. We have Shailendra Mishra with us. Shailendra, were enough warnings given by the chair before this decision was taken to crack down on indiscipline by suspending these 7 Congress MPs? नहीं रहती। बिल्कुल हम जानते हैं ये बहुत अहम फैसला और जी किशन रेड्डी हमारे साथ बता रहे हैं कि ये बहुत अहम फैसला है। तो किस तरह से देख रहे हैं दूरदर्शन न्यूज जानना आपसे जा रहा है, किस तरह से आप फैसले को देख रहे हैं जो आज ये कड़ा फैसला लिया? देश का जनता चाहते हैं आज उनका सांसद अनुशासन के साथ काम करे, अच्छे डिबेट में पार्टिसिपेट करे, बिल्स में चर्चा करे, देश में अच्छे पार्लियामेंट का सांसद का प्रतिष्ठा गर्मी बढ़ाने के लिए प्रयास करे, ऐसा चाहते हैं। मगर इतना अनुशासन सांसद नहीं रहना चाहिए, कोई जनता भी उसके पक्ष में नहीं रहते हैं। इसलिए ये लोकसभा का प्रतिष्ठा रक्षा करने के लिए आज स्पीकर ने ये निर्णय लिया है। ये स्पीकर का निर्णय का 130 करोड़ जनता आज समर्थन में रहेंगे। आपको लगता है सख्त संदेश जाएगा जो ऐसे सांसद जो नियमों का पालन नहीं करते? क्योंकि आज स्पीकर के ऊपर स्पीकर पैनल चेयर में एक महिला बैठे हैं
उस महिला को अपमान करते हुए बुक्स फेंकना उनके ऊपर, पेपर्स फेंकना, बिल्स फाड़ कर बाल बनाकर उनको मारना, स्पीकर के मुंह के ऊपर काला बैनर लगाना, स्पीकर हाथ से पहली बार 70 साल में हुआ है, स्पीकर का हाथ से पेपर छीन कर फाड़ कर फिर स्पीकर के फेस के ऊपर डालना, ये अनुशासनहीनता का पराकाष्ठा है। इसके लिए आज स्पीकर ने निर्णय लिया है, पूरे संसद देश के जनता आज एक अच्छा निर्णय किया है, इसलिए जनता पूरा समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी किशन रेड्डी बता रहे थे कि जो स्पीकर ने फैसला किया है निश्चित तौर पर इससे एक सही संदेश जाएगा और जो एक अनुशासनहीनता एक तरह से की उसकी पराकाष्ठा इन सांसदों ने अपने व्यवहार के जरिए सदन के अंदर दिखाई थी। तो मुनमुन कई सत्ता पक्ष के सांसद मंत्री दरअसल ये कह रहे हैं कि इस तरह से जो एक व्यवहार है लोकसभा के अंदर जो इन सांसदों ने महिला पीठासीन Right, Shailendra, hold your thoughts. Shailendra reporting on suspension of 7 Congress MPs by Lok Sabha Speaker. Now let's go across live to a briefing by Union Minister Prahlad Joshi. एक इंडिपेंडेंट एमपी ने जब कुछ कमेंट किया, अगर वो कमेंट अनपार्लियामेंट्री है, ठीक नहीं है, तो वो स्पीकर डिसीजन लेगा, स्पीकर विल डिसाइड ऑन दैट। बट उसके लिए जो चेयर पे थे श्री अग्रवाल जी, उनके ऊपर जो टेबल पे थे पार्लियामेंट लोकसभा के टेबल पे, वो कागज डायरेक्टली उनके ऊपर फेंका गया। आज तो पहली बार दोपहर में जब हमारा 2 ऑर्डिनेंस लैप्स हो रहा है, इसलिए जब हम पारित करने के लिए रिक्वेस्ट किया, वो मना किया, तब हम उसका कंसिडरेशन चल रहा था। 70 इयर्स में जहाँ तक मुझे इधर बहुत अनुभवी लोग बता रहे हैं और मुझे भी 10 वर्ष का अपोजिशन में एक्सपीरियंस है, कभी भी स्पीकर के कागज छीन के जाना जो फॉर्मूला था बिल पारित करने का, वो तरुण गौरव गोगोई छीन के जाना, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, हाईली कंडेमेबल, अनपार्डनेबल। इसके कारण हम बहुत सहनशीलता से उन लोगों से बातचीत करने का भी पहले दिन से सिलसिला हमने रखा है। आज भी कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन से हमारा बातचीत हुआ था, आपको विरोध करना है तो करो। 11th को हम ऑलरेडी डेट डिसाइड हुआ है, और जब डेट ऑलरेडी डिसाइड हुआ है, टाइम डिसाइड हुआ है, आपका प्रॉब्लम क्या है? द होल कंट्री एंड द एंटायर पार्लियामेंट एंड द सेंसिबल पीपल, they are not able to understand what is their problem, because already we have declared that 11th there will be full length discussion in Lok Sabha and 12th there will be full length discussion in Raj Sabha. उनको क्या प्रॉब्लम होगा? I am really not able to understand. I think they are suffering. There you heard Union Minister Prahlad Joshi speaking about the decision that Lok Sabha Speaker Om Birla has taken to suspend 7 Congress members of Parliament for unruly behaviour. They've been suspended for the rest of the budget session. Our reporters were telling us, giving us more details on what really transpired in both houses of Parliament, especially in the second half of the budget session, where we haven't seen much work taking place, and a lot of opposition is being seen in terms of unruly behaviour by the opposition benches, including sloganeering, raising placards, as well as rushing to the well of the House and even throwing paper missiles towards the chair. So the chair taking exception to that and cracking down on indiscipline. Let's move on now. Lok Sabha adjourned for the day over the Delhi violence issue amid ruckus. House took up the Mineral Laws Amendment Bill 2020 for passage. Well, the opposition uproar continued in Rajya Sabha over violence in northeast Delhi after Union Health Minister's statement in the upper house. Members put forth their views. Immediately after this, the opposition members stuck to their demand for discussion over the Delhi violence issue. As pandemonium continued by the opposition members, Chairman adjourned Rajya Sabha proceedings for the day till tomorrow. Prime Minister Narendra Modi in a tweet lauded Nari Shakti, and he has tweeted that inspiring women entrepreneurs, Nari Shakti securing India, women excelling in sports and leadership, women farmers showing the way.
been getting many motivating stories on exceptional women achievers. Do keep sharing more such life journeys. Hashtag She Inspires Us. So Prime Minister Narendra Modi's tweet ahead of International Women's Day on the 8th of March. Remember, he had earlier declared that he is giving up his social media handles for a day on Twitter, Instagram as well as Facebook, where inspiring stories of women will be posted on 8th of March. Well, amid coronavirus scare in India, with the confirmed cases of infections now rising to 29, Union Health Minister Dr. Harshvardhan has said that there is no need to panic, while adding that Prime Minister Narendra Modi is personally monitoring the situation, briefing both the Rajya Sabha and Lok Sabha on coronavirus outbreak and how it has impacted India. Union Minister Dr. Harshvardhan said that the situation is being monitored by the Health Ministry as well as by the Prime Minister's office on a daily basis. In our country, as on 4th March, a total of 29 positive cases have been reported so far. Of these, 3 cases were reported in Kerala earlier, who have since recovered and have been discharged already. Since last 3 days, new travel-related cases have tested positive. These include one in Delhi having travel history of Italy and Telangana having travel history from Dubai and contact history from person from Singapore. Both are clinically stable. 6 more cases have tested positive in Agra, Uttar Pradesh, having contact history with the case in Delhi. Required action as per cluster management plan has been initiated. Further, an Italian tourist and his wife have tested positive in Rajasthan. 14 other accompanying tourists in this group and their Indian bus driver tested positive on their return to Delhi. All of them are reported to be stable. A recent positive case has also been reported in Delhi yesterday, having travel history from Italy and is stable. The minister also said that India is in touch with Iran on possible evacuation of Indian pilgrims and students stuck in coronavirus-hit nation. Another major area of concern is Indian pilgrims and students stranded in Tehran and Qom, Iran, epicenters of the Iran COVID-19 outbreak. Government of India is following up with Iran authorities for their well-being and to tie up evacuation as per need. In addition to manage travel-related cases, additional challenge is to contain clusters due to local transmission that requires highly resource-intensive containment operations. And now an update on Indians stranded in Iran and for their families. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that our medical team for screening arrives in Iran today. Hope to establish the first clinic at Qom by this evening. Screening process will start immediately thereafter, working on logistics of return with Iranian authorities. That's a tweet by External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar on the Indian pilgrims and students who are stranded in Iran and would like to return to India, especially when that country is hit badly by novel coronavirus. Well, in addition to visa restrictions already in place, passengers travelling from or having visited Italy or Republic of Korea and desirous of entering India will need certificate of having tested negative for COVID-19 from the designated laboratories authorized by health authorities of those countries. This will be enforced from the 10th of March and is a temporary measure till cases of COVID-19 subside. So that's a fresh travel advisory that has been issued for all those who wish to visit India from Italy and South Korea. Special Health Secretary Sanjeev Kumar has said that universal screening has been mandated since yesterday evening in most of the airports across the country, adding that states have been asked to form rapid response teams to curb the potential spread of novel coronavirus. Universal screening has been mandated since 4th March 2020, that is yesterday, and has started in most airports from yesterday evening itself. It should stabilize today with additional staff being provided by the states. It has been decided to actively involve district collectors,
and states have been asked to form rapid response teams. Private sector shall also be engaged for COVID-19 management. The death toll from coronavirus in China has now crossed the 3,000 mark, with 31 new fatalities being reported, and the total number of confirmed cases has jumped to more than 80,400. While Chinese President Xi Jinping has called for undiminished vigilance, saying the situation in virus at Wuhan still remains severe despite positive progress. China's National Health Commission said that it received reports of 139 new confirmed cases of novel coronavirus infection and 31 deaths on Wednesday on the Chinese mainland. All the deaths were at the epicenter of the virus, which is Hubei province, and its capital Wuhan, which continued to be the ground zero of COVID-19. Also on Wednesday, 143 new suspected cases were reported, while the number of severe cases have now declined by 464 to 5,952, the NHC said, adding that 522 people were still suspected of being infected with the virus. The overall confirmed cases on the Chinese mainland have reached 80,409 by the end of Wednesday. This included 3,012 people who have died of the disease, 25,352 patients still undergoing treatment, and 52,045 patients who have been discharged. South Korea's total number of novel coronavirus cases, the largest outside China, approached 6,000 as authorities announced a ban on face mask exports. South Korea declared a special care zone around Gyeongsan, promising extra resources such as face masks and warning people from traveling there. Japan confirmed more than 1,037 coronavirus cases, and so far 12 people have died due to the infection. Nearly all schools are closed after Prime Minister Shinzo Abe called for classes to be cancelled through March and spring break slated for late March through early April. Italy reported a total of 107 deaths of the deadly coronavirus, taking the total number to 3,089. Italy ordered on Wednesday that all major sporting events be held behind closed doors until the 3rd of April as the country grapples with the deadly coronavirus outbreak. In Iran, the deadly infection claimed 92 lives out of more than 2,922 cases. Iran will temporarily release 54,000 people from prisons and deploy hundreds of thousands of health workers as officials announced a slew of measures to contain the world's deadliest coronavirus outbreak outside China. The USA's death toll from COVID-19 rose to 11 on Thursday, and nationwide there are nearly 160 confirmed cases. US House of Representatives overwhelmingly approved an $8.3 billion bill to combat the spread of the new coronavirus and develop vaccines for the highly contagious disease, sending it to the Senate for final passage. California Governor Gavin Newsom declared a state of emergency over the coronavirus in the state, which now has 53 confirmed cases. France said that 21 new cases of COVID-19 had been identified, with a total of 285 cases now diagnosed, of which 12 were cured and 4 have died. Some 120 schools closed in France this week in areas with the largest numbers of infections. Switzerland has confirmed first coronavirus death, with 58 confirmed cases of COVID-19 since the disease first surfaced in the country on the 25th of February. Well, that's it then in this edition of the news. News and updates will continue on DD India and DD News. Stay tuned.